हमने अल्फा बीटा बारे में पढ़ा और ट्रांजिस्टर ऑपरेशन पढ़ा। तो आज पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर सिंबल कैसा होता है? This is a symbol of a NPN transistor. अगर PNP हो तो ऐसा होगा। This is PNP. If the arrow is inside, then it's PNP. Now this is emitter, this is base, and this is collector. This is emitter, this is base, this is collector. So these are the symbols of a transistor. Now it has three types of connections. वो कनेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। पहले आज फर्स्ट टाइप्स बता देता हूँ उनकी। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ये दो टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद कॉमन एमिटर। दिस इज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। Now, what is common emitter? Make the circuit. ये सर्किट बना लो अपना। सबने बना लिया ये? Yes, sir. Now, this is a just an example. Just an example. Now, how it works? Now, first step one, forward bias the input junction.
Now this is the input junction. This is NPN. Now this is NP junction. तो forward bias करना है. This is the first. Forward bias means it apply voltage. VBB is the applied voltage through RB. RB is, you can say, current controlling resistor. Now VBB is normally, you can say, 2 volts. So we can't apply 2 volts directly to the forward bias junction. Directly can't be applied. So we have to apply it through a resistor. Let us say 2K resistor we have used here. RB is equal to 2K. So this resistor, thirdly, the input junction gets forward biased. Fourth, the emitter electrons start flowing into the transistor other regions such as base and collector. Base and collector, and a circuit is joined from the collector battery to the ground. Now how it behaves? Now this transistor, this is a transistor, in this is forward bias, this is reverse biased. Now this reverse bias and this forward bias will initiate a current through this transistor. It means that this battery will be connected to the ground through this transistor. Previously the transistor was off. Transistor was off. Why? Yes. Why it was off? Because your base voltage to be applied through RB was less than 0.7 volts. It was off. So as it increases beyond 0.7 volts, the transistor turns on. Like in diode. Now as the transistor turns on, it connects the VCC battery, that's equal to 5-volt battery, to the ground. Now as the battery is connected, what will happen? Current will flow. Now if current flows, then a output voltage starts generating. Now if the current is 0, if suppose let's I is 0 in off condition, what will happen to the output voltage? Coming back here, if I is 0, let us say this is off. So what will be output? Output V0 is equal to VCC minus IC I into RC. If you use a Kirchhoff's law here, so I is 0. So what is V0? V0 is equal to VCC is equal to 5 volts. So that is an off condition. So this is off condition.
This is equal to 5 volts. But if the transistor is on, then V naught reduces. What is V naught? V naught is equal to VCC minus IC into RC, I naught, I output. Now this I output starts flowing. So when transistor on, so this drop starts increasing. So RC drop starts increasing, then it becomes VCC, let's say 5 minus, let's say it becomes 2 volts, so it becomes 3 volts. Previously it was 0, so then it output was 5 volts. Therefore, as the transistor is turned on, the characteristics are generated. That is the output starts following the input. Characteristics होती क्या है? There is some relation of output with the input. So this starts happening when the transistor is on. ये बात समझ में आई बेटा? Now the transistor is on, current is flowing, and output is generated. So V naught is generated. Now how it behaves? How it looks like? So the output is like this. Now this I is normally denoted IC, that's a collector current, ICE, collector to emitter current. And VCE is collector to emitter voltage. Now how it looks like? Now it behaves as this fashion. First it increases, then it becomes constant. So there are several So this is the behavior of the current with the voltage with output voltage. So this is not linear. ऐसा नहीं है ये IC ऐसे हुआ और ये VC ऐसे हुआ और ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है. It is like this. It's like this. So first it goes some level and then it saturates. So this is saturation. So first is linear and then it saturates. So this is the how it flows. Now another thing which we have to look into this is there are several characteristics. Now this is with respect to base current. IB1, IB2, IB3, IB4.
With increasing base current, the collector current rises. What is this all about? Now, how to increase base current? To increase base current. Now we have read, कल पढ़ाया था मैंने आपको परसों कि जैसे ही बेस करंट बढ़ेगा यानी कि रिकम्बिनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा आईसी है वो घट जाएगा। ये पढ़ा था हमने। यस सर। बट हम यहाँ देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि आईबी जैसे बढ़ रहा है तो आईसी बढ़ रहा है, तो आईसी जाके ज्यादा बढ़ रहा है। ये उल्टा हो गया, बट ऐसा नहीं है, समझना पड़ता है इसको क्यों ऐसा हो रहा है। नाउ आईबी इज इंक्रीजिंग। आईबी इंक्रीज का मतलब ये क्या है कि आईबी इज इंक्रीजिंग, दिस आईबी मींस, जो यहाँ पर आईबी की बात हो रही है वो ये हो रहा है कि जो बेस वोल्टेज है, बेस टू मीटर वोल्टेज है, इस वन, ये वोल्टेज जो है, दिस इज बेस टू मीटर वोल्टेज। ये वोल्टेज अगर बढ़ेगा, ये वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो जो बेस करंट है वो बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीजेस, बेस करंट इंक्रीजेस। ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो हायर बेस करंट के ऊपर, यानी कि आप इसको मान के चलिए कि हमारा हायर बेस वोल्टेज आ रहा है, जितना हायर बेस वोल्टेज होगा उतना हायर जो होगा, हायर विल बी इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम emitter टू कलेक्टर। तो जो जितने ज्यादा जाएंगे ज्यादा वो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा और वो जाके हायर करंट्स के ऊपर सैचुरेट करेगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Now, if you see the characteristics, there is another point here. This line is called as load line. And the point where it starts intersecting any characteristics in the middle, that's called a Q point. ऐसा है। Now, what is this load line all about? Load line is about, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं मैथमेटिक्स के अंदर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन। ये पढ़ा ना क्वेश्चन हमने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर m इज स्लोप एंड c द इंटरसेप्ट। नाउ जो लोड लाइन है इसके लिए इक्वेशन है, दैट इज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICE इनटू RC। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोड लाइन। Now, if IC is equal to 0, if it is 0, then VCE is equal to VCC. Now, if you look at this line, if IC equal to 0, this is the point, then VCE is equal to VCC. Now, this is your VCE point. So then VCE is equal to VCC. This is VCC.
if IC equal to 0. It means that when the transistor is in off condition, then output VCE is equal to VCC. And we go 5 volts. So when it's an on condition, that is when VCE is equal to 0. On condition means maximum current will flow. So when VCE is equal to 0, then what will happen? Then ICE is equal to VCC divided by RC. IC is equal to VCC by RC. That's equal to 5 by 10, let us say 10 kilo ohm is equal to 0.5 milliampere. So this is the current which can flow in the maximum conditions. So if VC is equal to 0, then IC is equal to maximum this point. So this intercept is equal to VCC divided by RC. So the coordinates will be, you can say 0, comma this, and this will be VCC, comma 0. So these are the two coordinates of this line. And these are two more coordinates, ICEQ and VCEQ. What is this all about? The next point is ICEQ and VCEQ. This is called as quiescent point. Quiescent point or Q point. Now what is this? The transistor is biased at this point. We don't bias it at either extreme points. अब एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाले. हम ट्रांसफर यहाँ नहीं ऑपरेट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट एक फैक्टर 0 है. तो अब क्यू पॉइंट पे क्या है? क्यू पॉइंट जो है ये लोड लाइन का और एक किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिडिल के अंदर. तो दिस जो VCEQ है, दिस इज इक्वल टू, नॉर्मली इट इज इक्वल टू VCC by 2 and ICQ is equal to ICE maximum divided by 2 और VCC by 2 RC. ये पॉइंट है. तो इस पॉइंट के ऊपर जो है हम इस ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं. बायस मीन्स सारी जो इसकी वोल्टेजेस होती हैं इनपुट पे, वोल्टेजेस एट द इनपुट are such that the transistor produces VCC by 2 RC as output current and VCC by 2 as the output voltage. तो ऐसा है. This is called as the characteristics, output characteristics. Now another point here is that is how can we generate modes of a transistor. मोड्स क्या होते हैं? अब जैसे हमने ये 2 पॉइंट पढ़े, this is one extreme point, this is one extreme point, and this is one point. These 3 points, these 3 points
are called as modes of a transistor. पहला जो होता है दैट्स कॉल्ड कट ऑफ, दूसरा सैचुरेशन, तीसरा एक्टिव। ये तीन मोड्स हैं जो ट्रांजिस्टर जिसके ऊपर ऑपरेट करता है। व्हाट इज कट ऑफ? कट ऑफ ऑपरेशन नाउ कट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? This is transistor with alpha, beta, and all parameters given. Now this is your base voltage. Now it requires 0.77 volts to turn on. This is V0 and this is your IC. Now this 0.7 volts is to be given to this transistor. Now if we are not able, now we have to cut off. Cut off means that this transistor, the transistor stops working. Working means it does not serve as an amplifier device. Okay. Now, how it will be done? How it can be stopped? Yes, anyone? Yes. Sir, VBE less than 0.7 volt. VBE less than 0.7 volt. Yes. Okay. Now, if we do it, what will happen? Sir, BE की biasing नहीं होगी. Okay. V not equal to VCC. Now, VB को अगर हम यहाँ पर 2 वोल्ट दें, यहाँ एक रेजिस्टेंस लें, तो ये ट्रांजिस्टर इतना चालाक है कि ये 0.7 वोल्ट ले लेगा। तो इसको लेसर कैसे दी जाए? तो जो ये 2 वोल्ट्स है, इसको अगर हम 0.7 वोल्ट कर दें तो क्या होगा? तो ट्रांजिस्टर जो अभी जो रेजिस्टर है, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज तो लेगा, जब करंट फ्लो करे कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, तब यहां पर जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। तो अगर इसको वोल्टेज जो है, अब लिख लो, पॉइंट लिख लो, इफ द बायस इज डन in such a way that input voltage VBE is lesser than 0.7 volts but greater than 0.65 volts. This one. So 0.65 वोल्ट से ग्रेटर होने चाहिए, यानी कि 0.65 से लेकर 0.7 वोल्ट तक चलेंगे अगर हम, तो करंट नहीं फ्लो करेगा, बायस नहीं होगा।
तो जैसे हम एक डायोड की बाइसिंग करते हैं, तो ये जो पॉइंट है 0.7 वोल्ट्स का है, इससे पहले वाला जो पॉइंट है इस पे बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है हम इसको इससे लेसर पे चलाएंगे, यानी कि यहाँ पर चलाएंगे, तो ये बहुत कम जो है इसका करंट फ्लो करेगा। तो वो जो करंट जो फ्लो करेगा, दैट विल नॉट क्रिएट एनी आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि जैसे वो बहुत कम करंट फ्लो करेगा इस ट्रांजिस्टर में, तो आईसीआरसी क्रिएट हो जाएगा, आईसीआरसी क्रिएट होगा, बट वो नियरली जीरो के करीब ही जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वी नॉट आएगा, दैट इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो आईसी जो है वो नियरली जीरो ही रहेगा, तो वी नॉट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। So in this way we can cut off this transistor from the circuit. Cut off means cutting this transistor from the rest of the circuit. So no current flows. You can say no appreciable current flows. And output voltage V0 is equal to VCC. This is cut off. Number 2 जो है point, that is saturation. Now saturation में क्या होता है, V0 is equal to 0. This is 0. तो अब मुझे बताइए कि इसको कैसे करते हैं जीरो, हम जीरो से कैसे करेंगे, अगर इसका जो करंट है इस लूप में I इज इक्वल टू मैक्सिमम, लोड लाइन देखो, I मैक्सिमम यहाँ पर होता है जब दिस वन PCC by RC इज द मैक्सिमम करंट यहाँ पर, और आउटपुट वोल्टेज जीरो होती है। तो ये अचीव कैसे होगा, गैस वन, जस्ट गैस, write down. Step 1, increase the base voltage from 0.7 volts to 0.75 volts. अब ये वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू, यू कैन से 2 वोल्ट्स, यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ 0.7 आता है। तो अगर हम इस वैल्यू को बढ़ा दें, 0.7 वोल्ट्स कर दें, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर कर, अगर हम कम कर देंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसी वैल्यू बढ़ेगी 0.7 से 0.75 की तरफ चली जाएगी, उससे क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है IE, ये मैक्सिमम हो जाएगा। IC बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो सीधा ये जो आरसी की तरफ ये ड्रॉप है, आईसीआरसी, जो आईसीआरसी ड्रॉप है ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ये मैक्सिमम हुआ तो जो V नॉट है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये जो मैक्सिमम हो गया तो दिस इज नियरली 0। तो ये पॉइंट जो है ये डाउन टू 0 आ जाएगा। 0 नहीं आया तो 0.2 तक आ जाएगा। तो 5 वोल्ट था रिड्यूस टू 0.2 वोल्ट, तो इतना कम ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। Saturation means how much maximum current the transistor can handle. कि कितना मैक्सिमम करंट इसमें ये हैंडल कर सकता है। Saturate means that's enough. Saturate means enough. तो इसके बाद जो है करंट ज्यादा नहीं जा सकता। और कट ऑफ मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन जनरेट। दो चीजें, which is the second mode of operation of this transistor. Do we have some time? Before am I audible? Yes, sir. मेरा टाइम कितना पड़ा है अभी? 6 minutes, sir. कहते हैं। Okay. So last 6 minutes for questions. Anyone? Yes. Any questions you have today? एक्टिव मोड कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। Yes, any questions? No, sir. Okay बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, ओके बेटा, ओके Thank you, sir. ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।